Hello students, welcome again to the online class 10 science. Today's topic will be sign convention for refraction by spherical mirrors. Okay, very important topic it is because this we will use in numericals. Numericals में इसका यूज होना and numericals में हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि कौन सी चीज नेगेटिव होनी है, कौन सी पॉजिटिव होनी है. So this video is all about कि न्यूमेरिकल में कौन सी चीज पॉजिटिव रहनी है, कौन सी चीज नेगेटिव रहनी है. Okay, the first I am telling कि the sign convention for spherical mirror, the method which we will use, it is known as Neo-Cartesian sign convention based on Cartesian coordinates. जैसा हमारा ग्राफ में होता है सेम ऐसा ही इसमें भी होगा. The principal axis will be known as x-axis. ये हमारा x-axis की तरह काम करेगा. Okay, that means and pole will be known as origin. Pole क्या होगा? Origin होगा. And the distance towards the right ऑलवेज पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स कोई भी चीज पोल से इधर बनेगी या रखी गई होगी, ऐसे ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज इधर रखा गया होगा क्योंकि दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो जो भी इमेज बनेगी वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल. पोल के साइड जो भी बनेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. इमेज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑब्जेक्ट हम यहां रखते हैं तो पोल से इसको मेजर करेंगे तो वो ऑलवेज कहां जाएगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट. एज वी नो कि दिस इज एक्स एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस इन दिस वन. सो ऑन द राइट साइड इट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑन द लेफ्ट साइड इट इज ऑलवेज नेगेटिव. राइट साइड में वो पॉजिटिव होगा एंड लेफ्ट साइड में वो क्या होगा? नेगेटिव. ओके, नाउ तो फर्स्ट what you have to learn कि all the distances which we will measure always measured from pole. वो always कहां से measure की जाएगी? pole से. The first, the object is always placed to the left of the mirror. The first rule is कि जो भी object है वो mirror के left side में रखी गई होगी. As it is placed in the left side, तो उसकी distance always क्या होगी? Negative होगी. This is very important. First one कि जो भी object is always placed towards the left side of the, that means it is always in front of the mirror. The object is always in front of the mirror. अब mirror के आगे रखा गया है, towards the left रखा जाएगा तो it will always be negative. The distance will be negative. Second, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. As I told earlier as well कि जितनी भी distances हैं वो कहां से measure की जाएंगी? From the pole of the mirror. Okay, whether it is here on the left side or whether it is on the right, it will be measured from the pole. Okay, the third one, distance to the left of the pole are always negative and towards the right of the pole are always positive. जो भी चीज यहां रखी जाएगी या बनेगी, वैसे यहां रखा तो कुछ नहीं जाएगा, ऑलवेज यहां हम रखते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो ऑलवेज जो भी चीज यहां पे बनेगी, दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन जो भी होगा, जो वर्चुअल होगा, ऑलवेज वर्चुअल है, इरेक्ट बनेगा. वर्चुअल ऑलवेज जो इमेज यहां बनेगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, जो इधर रखी जाएगी वो ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव की. जो इमेज इधर बन रही है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव होगा. डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस विल भी क्या होगा? नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज जो इधर बनेगी वो भी क्या होगी? नेगेटिव. इधर लेट्स सपोज कोई इमेज बनती है, एज वी हैव लर्न इन कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. कॉन्वेक्स मिरर क्या देता है? वर्चुअल और इरेक्ट. तो वो कहां बनेगी? इधर बनेगी. अब वो इधर बनेगी तो वो कहां होगी? पॉजिटिव होगी. वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव एज इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और मिरर के पोल बीच में होगा, इट विल बी इन सेंटर, और लेफ्ट साइड क्या बनेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी. नाउ fourth one, distances measured perpendicularly above the principal axis are taken as positive and below the principal axis are taken as negative. Okay, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऊपर ही रखा जाता है तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव. इमेज जो नीचे बनेगी, इमेज विच वी विल गेट इज ऑलवेज, इफ इट इज वर्चुअल, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड. इन द केस ऑफ रियल इन्वर्टेड ऑलवेज कहां बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे. एज यू हैव लर्न इन रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलरली अबव रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के,
एंड जो इमेज फॉर्मेशन होती है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर वो ऑलवेज क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस में जो भी इमेज बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल बी नेगेटिव। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि इन द केस ऑफ फोकल लेंथ of concave mirror, focal length of concave mirror, when you will complete this circle you will get focal length, center of curvature, focal length here. So focal length in the case of concave mirror, as it is left side of the pole, the focal length is left side of the pole, so it is always negative. And in the case of convex mirror, this is pole, this is principal axis, this is center of curvature, this is focal length, focus. The focal length of convex mirror, the focal length of convex mirror, as we know focal length is what? The distance between P to F. As it is towards the right side of the pole, so it is always positive. Okay, one more time I want to tell. First, जो भी ऑब्जेक्ट होगी कहां पे रखी जाएगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, वेदर नो मैटर की व्हाट द मिरर इज, व्हाट द टाइप ऑफ मिरर। मिरर कॉन्केव है तो भी यहीं रखेंगे हैं, और कॉन्वेक्स है तो भी वो यहीं रहेंगे। अब वो इधर है तो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। एंड जो चीज इधर पे रखी जाएगी या बनेगी, the image formation होगा on the right side, it will always be taken as positive. All distances are measured from this. पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, very very important. Third, distance towards left of the pole are negative. लेफ्ट में जो भी चीज आएंगी वो नेगेटिव होंगी, राइट में जो भी चीज आएंगी पॉजिटिव होंगी। ऊपर जो भी चीज होगी, द परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी चीज होंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जो नीचे होंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ओके, पॉजिटिव मीन्स positive means above the principal axis and negative means below the principal axis. Okay, that means the height of the object वो always कहाँ होगा, the height of the object, this is the height of the object from here to here, और वो perpendicularly कहाँ होगा, principal axis से ऊपर, it will always be positive. अब जो image formation होगी वो क्या होगी, let's suppose in the case of concave mirror, real inverted नीचे की ओर बनती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, तो इट विल ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. सो आई होप कि you understand the rules, that is the sign convention, and next video we will learn the magnification. Hello students, welcome again. Now the topic will be linear magnification. As we have heard this word again and again while making the ray diagrams, magnified. You have heard the word magnified. That means हम magnified image प्राप्त कर रहे थे. We were having magnified image. What is magnification? Magnification means कि इमेज कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, लार्ज और स्मॉल. द मैग्निफिकेशन टेल्स अस कि द इमेज विल बी लार्ज और स्मॉल. ओके, ओनली दिस. नाउ फर्स्ट द डेफिनेशन. इट इज द रेशियो बिटवीन height of the image to the height of the object. It is only the ratio between the height of image upon height of object. Okay, it is represented by a small letter n. And since the height of the image will be in centimeter or object will be in centimeter, both will be in centimeter or both will be in meter, that unit will cancel, then you will get a unitless quantity, and magnification is a unitless quantity. It is also be defined as the ratio of image distance to the image, of the image distance upon object distance. That means the ratio between image distance upon object distance. That means U stands for image distance, V stands for image distance, and U stands for object distance.
इन दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे देन वी विल गेट द मैग्निफिकेशन एंड द माइनस साइन डिनोट्स दिस माइनस साइन डिनोट्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज कहां प्लेस होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर though it is on the left side of the pole so it is negative and in the case of convex mirror as well it is placed in front of mirror and it is on the left side also. It is in the case of convex mirror it is also to the left side of the pole so it is also negative. So this negative sign is because of the object distance. Negative sign is here. Okay, so don't afraid कि negative कहाँ से आया. Negative is only because of the object distance because object is always placed in front of mirror left towards the left side of the pole. Pole के left side में होता इसीलिए ये क्या बन जाता है negative. Okay, now few things I want to tell. First, if magnification comes greater than 1 then you will get an enlarged image. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है देन वी विल हैव अ enlarged image. If it is coming smaller than 1 then we will get a diminished image, that means small, whatever it can be. And when magnification is coming exactly equal to 1 then the image will be of same size. Okay, let's take an example. Let's suppose the image distance, that means height of the object is 4 centimeter and the object is 2 centimeter. Let's suppose. Then what will you have? Magnification equal to centimeter will be cancelled by centimeter. 2 1 ja, 2 2 ja. Then you will get magnification equal to 2. Unitless quantity. And magnification is coming 2. That means the image is 2 times greater than that of object. If it is coming 2, that means the image is 2 times enlarged or greater than the height of the object. Okay, let's suppose HI is given 3 centimeter and height of object is given 2 centimeter. Then how can we find magnification? So magnification is equal to height of image upon height of object. Height of image 3 centimeter, height of object 2 centimeter. Centimeter will be cancelled by centimeter, and 2. Then when you will cancel, then you will divide 3 by 2. You will get 1.5. That means if magnification is coming 1.5, it is greater than 1. That means you will have a enlarged image. And how much enlarged? 1.5 times enlarged. That means bigger than that of object. Okay. Now again you can find by this formula as well. Let's suppose the image height, the image distance is given 40 centimeter. That means the image you will get is 40 meter here or here as well, you can say, and object is 20 centimeter away. Okay, by this you can find the magnification as well, and minus is there. Now the image distance, if it is if the image is on the left side of the pole, then you will have a negative sign. For real and inverted image, real or inverted image के लिए you will have negative sign, and for virtual and erect you will have a positive sign, because the real and inverted image only formed on the left side of the pole. वो pole के left side में होती है और principal axis के नीचे बनी होती है, so you will have negative sign. This negative which was in the formula, this negative signs for the image. Okay, and object here, object we know कि object is always placed in front of the mirror, so it is always negative. वो तो always negative होना है. So minus will be cancelled with this minus,
and you will get 40 by 20, centimeter upon centimeter, centimeter will be cancelled by centimeter, this minus remain as it is, 22 ja. You will have minus 2. That means it is also greater than 1. This minus sign denotes that you will have a real or inverted image. You will have a real and inverted image. For real and inverted image, you will have magnification in negative. And this 2 denotes that the image is 2 times greater than that of object. Now, some important term is there, sign of M. For real and inverted image, you will have negative magnification. The magnification will have negative sign, as in the case of this one. Here it is in negative. That means negative sign. For real and inverted image, you will have negative sign. And for virtual and indirect image, you will have a positive sign on magnification. This is all about magnification.